Okay, let's start. Uh, Today, what we are going to do, we are going to perform the operations based on these objects, and then उसके साथ साथ हम लोग पेज लेआउट एंड सर्च लेआउट के बारे में जानेंगे कि हाउ टू यूज पेज लेआउट एंड सर्च लेआउट, हाउ टू ऐड दोज फील्ड्स जो अभी भी हम लोगों ने ऐड नहीं किया था. आई थिंक रेटिंग नाम का जो फील्ड था, वो रेटिंग नाम का फील्ड हमने ऐड नहीं किया था. वो देन वी हैव सम कैलकुलेटेड फील्ड, सेलिंग प्राइस वगैरह हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया था. ये सारी चीज़ें आज हम लोग कवर अप करेंगे. एंड टू डू दैट जस्ट गो टू योर डेवलपर ऑर्ग, लॉग इन करो डेवलपर ऑर्ग पे, और एक टैब में हम हमारा एप्लीकेशन ओपन करके रखेंगे. लेट्स ओपन द एप्लीकेशन कॉल्ड टीएमएस इन अ डिफरेंट टैब. Now you can see we have various tabs over here. One is student, another is trainer, then we have courses, and then we have purchases. So these are the four objects majorly जिसके ऊपर हम लोगों ने काम किया है. Now when I click on trainers and let's try to add a trainer into it. Now you can see, एक एक मिनट वेट करो. हाँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, एक मिनट वेट करो. Sorry for inconvenience. Let's start now. Let's try to add a new trainer into this trainer object. We have this much fields with us. Let's feed some data into this. Let's add Robin. Let's add a email ID, robin@gmail.com. Let's select the country. Robin country is India. Let's say experience is of 12 years. Qualification is MTech. Let's have a mobile number, something like कुछ भी random number दे सकते हो. Then select the state according to the country. Let's have a Maharashtra and trainer name. अब यहाँ पे गलत हो गया ना. गलत क्या हुआ यहाँ पे? गलत ये हुआ कि वी एड अ ट्रेनर नेम इनटू दिस ट्रेनर ऑब्जेक्ट. बेसिकली ट्रेनर शुड बी in relationship with the other object na. So basically we made trainer name, sorry, it is a trainer name. I'm sorry, मेरा पढ़ने में गलत हो गया. Add a trainer name Robin Thompson. Actually वो email ID की वजह से confusion हो गया था मेरा. Robin Thompson. Now let's click on save to create this particular trainer. Now you can see the trainer T001 has been created successfully. Okay, now let's try to add few more trainers into this and let's click on new. अब देखो मेरा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि ईमेल आईडी पहले मैंने इधर रॉबिन नाम दे दिया. सो आई थॉट कि क्या मैंने गलती कर दी है क्या, बट इट इज करेक्ट. अब ये कंफ्यूजन ना हो. ये जो लेआउट है, ये लेआउट कैसे जनरेट हुआ है? जो जो ऑर्डर में हम लोगों ने फील्ड्स क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट के अंदर, उसी ऑर्डर में ये फील्ड्स यहाँ पे अपीयर हो रही है. नाउ आई नीड टू make this particular window to be interactive. Okay, इसको well organize करना है मेरे को field को. And to organize these fields, what I need to do, I need to go to my pass side. Okay, अब कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका fields हमको ऑर्गेनाइज करने का है? तो इट इज अ ट्रेनर ऑब्जेक्ट. सो इसलिए पहले ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएंगे. गो टू योर ऑब्जेक्ट मैनेजर एंड सर्च फॉर द ऑब्जेक्ट कॉल्ड ट्रेनर. So this is my trainer object. Just click on trainer object. Once you click on the trainer object, then here you will find page. Okay, you can find page layout over here. So when I click on page layout, the page layout is already being there for the trainer object. तो आपने जब fields and relationship में fields create किए थे ना, वो टाइम पे आपको अगर याद आता होगा तो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आता है जहाँ पे सेव के लिए होता है कि दैट पर्टिकुलर फील्ड इज ऐड इनटू द लेआउट. तो वो लेआउट आपको ये पेज लेआउट ऑप्शन से मिलेगा. सो दिस इज द पेज लेआउट. तो ये ऑलरेडी सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है व्हेन यू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट.
So I'm going to click this layout. Okay, once I click on this particular pop-up, जो आपके layout को show करेगा. Now you can see this is the screen where you can work on a layout. Now इधर आप देखो, अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करता हूँ. तो स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करूंगा तो ये वाला जो पोर्शन है ये फिक्स पोर्शन है. ओके, दैट फिक्स पोर्शन या दिस फिक्स पोर्शन इज कॉल्ड एज अ पैलेट. इसको क्या कहेंगे हम, इसको बोलेंगे पैलेट. ओके, दैट पैलेट कंटेन फील्ड्स, बटन, क्विक एक्शन, मोबाइल लाइटनिंग एक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स. तो जो भी आपको इस पैलेट पे चीज अवेलेबल होगी वो चीज आप आपके लेआउट में यूटिलाइज कर सकते हो. एंड बिलो दैट यू कैन सी your fields. Okay, so here you can see a trainer details, and in bit under this we have this information section, and we have all those things present over here. So what basically we used page layout for the organizing your fields. Okay, so it is for the organizing purpose. अब क्या करना है, अब हमको इसको ऑर्गेनाइज करना है इन अ प्रॉपर वे. ओके, एंड टू डू दैट वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड सेक्शन ओवर हियर. सो यू कैन सी वेन एवर आई गो टू दैट सेक्शन, तो ये यहाँ पे आपका कर्सर चेंज हो गया है. इट शोज क्या है, ये आप ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर सकते हो. ओके, सो वेन एवर यू रिक्वायर्ड अ सेक्शन यू कैन ड्रैग दिस सेक्शन एंड ड्रॉप इट इनटू द इंफॉर्मेशन सेक्शन. ओके, तो अभी इधर देखो, जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ you can see a red color mark over there. Okay, the red color mark is representing you are not supposed to drop that particular section on this region. Okay, और लेकिन जैसे हम नीचे जाते हैं तो आप देखो that part is now converted into green color. right sign आ गया वहां पे. it denotes that we are able to drop this particular section over here. so I'm going to drop this section. जैसे मैं ड्रॉप करूंगा ये सेक्शन का नाम पूछेगा, लेट्स से qualification. Qualification. Okay, now detail page, edit page. Now it will ask you about the layout. ओके, सो कौन सा लेआउट चाहिए, 1 कॉलम लेआउट चाहिए कि 2 कॉलम लेआउट चाहिए. मैं जनरली प्रीफर करता हूँ 2 कॉलम लेआउट, यानी कि ये पर्टिकुलर पेज 2 कॉलम में डिवाइड होगा. एक कॉलम में एक डेटा, दूसरे कॉलम में दूसरा डेटा. एंड देन इट विल आस्क यू अबाउट टैब की ऑर्डर. टैब की प्रेस करने के बाद में लेफ्ट टू राइट ऐसे टैब जाना चाहिए कि टॉप टू डाउन ऐसे जाना चाहिए. सो जनरली स्टैंडर्डाइजेशन कहता है लेफ्ट टू राइट और 2 कॉलम्स आपने सिलेक्ट करना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट विद दिस. तो जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ यू कैन सी देयर इज a new section added over here called qualification. Okay, so I'm going to drag and drop this at the bottom of this information. Now you can see information ऊपर है, and then we have qualification section at the bottom. So qualification section में हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं, we can add a qualification of that particular person, और साथ ही साथ मैं कुछ experience वाली फील्ड भी इधर ऐड कर देता हूँ. सो आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज 2 थिंग्स विद द हेल्प ऑफ क्वालिफिकेशन. ओके, देन let's say add more section over here. Now I'm going to add a section called address. Okay, now once again I'm going to use 2 columns and left right tab key. Now you can see here a address section has been created, and एड्रेस सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अभी कंट्री को लेंगे और दूसरा हमारे पास में आता है स्टेट, इसको दूसरे साइड में डाल देंगे. नाउ वी ऑर्गेनाइज दीज 2 थिंग्स अंडर द सेक्शन कॉल्ड एड्रेस. ओके, नाउ अभी कौन सा इंफॉर्मेशन है, वी हैव email and mobile number with us. So I'm going to drag this section once again and drop it over here, and I would say it is a contact information. Okay, contact info, and just click on OK. You can see a contact info section has been created. So मोबाइल नंबर एक साइड में लेंगे एंड ईमेल आईडी एक साइड में ले लेंगे. सो अब इसमें एक ही सेक्शन के अंदर आप मल्टीपल फील्ड्स को भी ऐड कर सकते हो, बट वी नो दैट दिस फील्ड इज बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सेक्शन एंड दिस फील्ड्स आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्शन. दैट्स व्हाई वी मेक इट सेपरेट. ओके, एंड दैट्स ऑल. ये मैंने अभी क्या किया, इसको बाइफर्गेट किया बेस्ड ऑन दी
कैटेगरीज, ओके, सेक्शन। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अलग किया, एड्रेस इन्फॉर्मेशन एंड क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन अलग किया, एंड जनरल इन्फॉर्मेशन में हम लोगों ने लिखा ट्रेनर का नेम। नाउ लेट्स क्विकली सेव दिस बाय यूजिंग दिस क्विक सेव। क्विक सेव से क्या होगा, सेव होगा लेकिन बाहर नहीं आएंगे, सेव से क्या होगा, सेव होगा और बाहर आ जाएंगे ये लेआउट के। ओके, सो आई एम quickly save this and then go to your SaaS side, open your trainer object, रिफ्रेश कर लिया उसको, पहले ट्रेनर ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक किया, देन क्लिक ऑन न्यू। नाउ यू कैन सी योर डेटा और योर फील्ड इज नाउ मच मोर ऑर्गेनाइज्ड वे। नाउ पहले कैसा था, पहले एक के नीचे एक, एक के नीचे एक सारे फील्ड्स आ रहे थे। नाउ वी ऑर्गेनाइज दैट पर्टिकुलर फील्ड्स इन अ सच अ वे दैट कि जो फॉर्म है वो फॉर्म हमको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे कि हमको कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। नाउ let's add a few data over here. Let's say Alex Thompson, add a trainer mobile number, any random number, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 number. Let's have email id alex@gmail.com, and then it will ask you about the address. You just need to select the country and the state, and then finally you need to have a qualification. Let's say BTech, experience is of 5 years. Let's quickly click on save and new to create a new account. Now this T002 account or trainer is created. Now next एक और ट्रेनर ऐड कर लेते हैं. Let's have Piyush, then contact number is 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Let's have piyush@gmail.com. Then select a country called India, then Maharashtra, and then add a qualification that is BE. And add experience. Okay, he has 3 years of experience. Let's quickly save this. Now you can see T003 or T003 trainer has been created successfully. Now you can see we have created 3 trainers over here, okay, by using the trainer object. Now let's move ahead and go to your courses object, and let's try to add few more courses or few courses into this object. And to add these courses, we have new button over here. Click on new and just add the data over here. So let's add the course name first. Let's say ML. कोर्स डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे मशीन लर्निंग इज important in modern days. Course fee, let's say we have a course fee of 3000 rupees. Total hours 40 hours का हमारा ये course है, and how many sessions are there? So we have 100 sessions are there, and let's say 99 sessions are there, and you need to select the trainer. तो अभी ये मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में इसलिए ये यहाँ पे एस्ट्रिक साइन आया, विच डिनोट दैट दिस फील्ड इज मैंडेटरी. यू आर इफ यू ट्राई टू सेव दिस तो ये बोलेगा कि यू नीड टू कंप्लीट दिस, है ना. तो यहाँ पे वैलिडेशंस लगने वाला है. जस्ट क्लिक ऑन दैट. नाउ यू हैव द ट्रेनर सेट ओवर हियर. क्योंकि ये मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है तो डेटा किधर से आएगा, ट्रेनर से आएगा. सो ट्रेनर में हमने 3 ट्रेनर्स क्रिएट किए थे, T001, 002 एंड 003. You can see we have all these 3 trainers over here. So I am going to click one of the trainer, और ये ट्रेनर ये वाला कोर्स ले रहा है ऐसा हम लोग प्रिटेंड करेंगे. एंड लेट्स क्लिक क्विकली सेव. नाउ योर record has been created for the course object. Now let's try to create few more courses into this course object. To do that we just click on new. अब यहाँ पे भी हमको लेआउट चेंज करने का है तो क्या करेंगे, go to your pass, go to your object manager. अब कौन से ऑब्जेक्ट के लिए चेंज करना है, तो कोर्स ऑब्जेक्ट के लिए चेंज करना है. सो गो टू योर कोर्स ऑब्जेक्ट. ओके, गो टू योर पेज लेआउट टू चेंज द लेआउट और ऑर्गेनाइज योर
fields. Okay, and then just click on this. Now you can see this palette over here which having these things. अब इधर देखो course fee है ना, course code, course description, these all things are grayed out. सिर्फ सेक्शन और ब्लैंक स्पेस यहाँ पे है, तो ग्रेड आउट है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली सारी फील्ड्स हमने हमारे लेआउट के अंदर ऐड करके रखनी है. अगर हमको ये वाली फील्ड इसमें नहीं चाहिए, सो यू कैन ड्रैग दिस फील्ड एंड ड्रॉप इट इनटू दिस पैलेट. नाउ यू कैन सी दिस बटन इज एनेबल्ड. ओके, इसका मतलब क्या है कि ये फील्ड अभी आपके लेआउट में ऐड नहीं किया है. आप सपोज करो, जैसे मैंने बोला था कि अगर फील्ड विजिबल नहीं है और फील्ड एक्सेसिबिलिटी भी है, तो क्या होता है जनरली पेज लेआउट के अंदर ये फील्ड ऐड नहीं होती है. सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू नीड टू कम टू योर पेज लेआउट. फिर वो फील्ड्स को आपको ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है आपके लेआउट के अंदर. ओके, आप क्या करेंगे, इस डेटा को भी हमको ऑर्गेनाइज करना है. लेट से इधर पेस्ट किया हमने, इसको नाम दिया कोर्स इन्फो. लेट्स हैव कोर्स इन्फो. ओके, course info contain course name. Okay, then we have course description. Okay, then I'm going to add one more element over here called course fee. Okay, and then add one more, let's say timing, or you can say course duration. जो भी आपको सेक्शन बनाना है, you can create that particular section. So I'm going to take it in hours. Okay. Add new IA. You just drag and drop it over here. Array. इधर ड्रैग करना है, and then सेशंस को ड्रैग करेंगे इधर. So you can simply see that. अब इधर क्या करेंगे, कोर्स फी और ट्रेनर ऐड करने के लिए, अभी ये इधर ऐड करने से अच्छा ट्रेनर के साथ में कोर्स फी ऐड कर देंगे. सो आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर section over here, and I'm going to give the name as a fee, trainer and fee information, trainer and fee info. That's all. And just create this section and drag this trainer over here, and then drag this fee ताकि वो वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिखे हमको. सो वी डिड दिस. नाउ लेट्स क्विकली सेव दिस by clicking on quick save. Go to your object or go to your SaaS site. एप्लीकेशन को ओपन करो, ऑब्जेक्ट को ओपन करो, रिफ्रेश करो इसको, and then click on new to add a new course. Okay, now you can see your field is organized in a much better manner. Okay, now let's add a new course. Let's say Salesforce Admin. Okay, course description, demanding technology. Duration, let's have 30 hours of duration, and total number of sessions, let's say 60 sessions, each session of 30 minutes. Let's select the trainer. Now I'm going to select a trainer T002, and course fee is of rupees 5,000. Okay, and let's quickly save. नाउ जैसे ही आप 5,000 डालते हो, तो बिकॉज वी यूज कोर्स फी एज अ करेंसी, तो यहाँ पे करेंसी रुपीज में ऑटोमेटिकली अटैच हो गया है. एंड यू कैन सी योर डेटा इज organized in much more better way. Okay, now when I click on the courses, now you can see we have a list of courses. अब ये कोर्सेज के लिस्ट पे से हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कोर्स यहाँ पे है ना. या फिर आप ट्रेनर पे जाओ, ट्रेनर पे जाओगे तो T003, T002, T001, ये ट्रेनर कौन सा एग्जैक्टली ये नंबर से हमको पता नहीं चलेगा. सो अब क्या करेंगे, वी ट्राई टू चेंज
the layout or the view of that particular thing by using a पास साइड अवे। अब यहाँ पे ट्रेनर के साथ में हम कुछ फील्ड्स इधर ऐड करेंगे ताकि हमको दिखे। साथ ही साथ आप इधर देखो, व्हेन वी ट्राई टू ऐड अ कोर्स, ओके, तो इधर जाते हैं, इधर ट्रेनर सिलेक्ट करते हैं, तो इधर ट्रेनर के सिर्फ आईडी आ रहा है, ट्रेनर का नाम नहीं आ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, इसमें वजह से हम लोगों को कंफ्यूजन होगा कि एग्जैक्टली कौन सा ट्रेनर हमको कौन से कोर्स के लिए अटैच करने का है, राइट। एंड टू अवॉइड सच थिंग्स, यहाँ पे भी ये सर्च लेआउट में भी हम क्या कर सकते हैं, इस आईडी के साथ साथ आप अपना नेम एसोसिएट कर सकते हैं और अदर इंफॉर्मेशन भी आप उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। एंड टू डू दैट, just go to your developer org, okay, go to your object manager. I think you will understand this page layout concept, okay. uh, just go to your object manager and then search for the object, कौन से object के लिए आपको करना है। Now I am going to apply these things on a trainer object. So पहले मैं trainer find out करूंगा, let's find out the trainer, okay, click on trainer. Now here we have a new option called search layout, okay. You can see the search layout. You just click on search layout, and then we have various profile with us, and we know that our profile is system administrator. You need to search for the system administrator, and you can see default layout है हमारे लिए, so we can edit this layout. So just go and click on edit to edit this layout. अब क्या होगा, अब इधर आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ट्रेनर का कोड आ रहा है। तो बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिलेक्टेड फील्ड कौन से है, सिर्फ ट्रेनर कोड है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ट्रेनर का नाम, ओके, और क्या चाहिए, हमको चाहिए लेट से ट्रेनर का एक्सपीरियंस। ये दो तीन चीजें हमको वहाँ पे शो करने के, सो वी विल सिलेक्ट these fields and just quickly click on save. Now you just go to your application and go to your tab and refresh this and see what will be the output of this thing. Now you can see we have a trainer code, we have a trainer name, and we have a experience is attached with this, okay. और similarly when we go to the course and click on new, और यहाँ पे हम ट्रेनर को सर्च करने की कोशिश करेंगे, तो इधर भी आपको दिखेगा कि ट्रेनर आईडी के साथ साथ ट्रेनर का नेम भी एसोसिएट हो चुका है, ओके। सो नाउ इट इज वेरी इजी फॉर अस टू सिलेक्ट द ट्रेनर फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स, ओके। तो अभी आपको ये समझा कि किस तरह से हमने ट्रेनर के सर्च लेआउट में हमने डिफरेंट फील्ड्स ऐड किया, ओके, बाय यूजिंग अ सर्च लेआउट। नाउ वी हैव अ ऑब्जेक्ट कॉल्ड कोर्सेस। यहाँ पे सिर्फ कोर्स का आईडी आ रहा है, कोर्स के नेम नहीं आ रहा है और ट्रेनर का नाम नहीं आ रहा है। एंड टू डू दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी वंस अगेन गो टू योर पास साइड, दैट इज डेवलपर ऑर्ग, एंड देन सेटअप पे जाके फिर ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएंगे एंड सर्च फॉर द ऑब्जेक्ट कॉल्ड कोर्स, क्लिक करेंगे, देन सर्च फॉर द सर्च लेआउट। सर्च लेआउट में जाने के बाद में अपना प्रोफाइल ढूंढो, अपना प्रोफाइल है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को जाके एडिट करो, जस्ट क्लिक ऑन एडिट। एडिट करने के बाद में यू सी कोर्स कोड सिर्फ लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कोर्स नेम ऐड करेंगे और क्या ऐड कर सकते हैं, कोर्स का फी भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ कौन सा ट्रेनर उस पर्टिकुलर कोर्स को ले रहा है वो भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं ना। यू हैव दैट इंफॉर्मेशन विथ यू, लेट्स क्विकली सेव दिस and go to your SaaS site, means in your application, and let's refresh this. Now you can see the much more richer data is now available with you. You can see a course code, name of the course, what is the course fee, and the trainer set, right? So in that way you are supposed to add the search layout or search data into your layout, okay. Now next, let's quickly add two more courses over here. Let's give the name Apex Programming. Course description.
Salesforce language. Let's go to the course duration. This course duration is of 45 hours. Number of sessions are, let's say 98 sessions are there. Let's add a trainer. Let's say Piyush is going to conduct this course, and the course fee is almost 8,000 rupees. Okay, so I'm going to save this. Now you can see the course has been created successfully. Now we have a student with us. Okay, we have a trainer with us. We have a courses with us. Now we are going to add and go, और वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ परचेस ट्रांजेक्शन. कौन परचेस करेगा? स्टूडेंट परचेस करेगा. क्या परचेस करेगा? कोर्स परचेस करेगा, राइट? And to perform that particular operation, we need to go to the purchase object first of all, then click on new to perform the transaction. Now you can see this particular layout is also not uh, pretty much organized. तो इसको हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं पहले. Okay, now when you click on student, you can see only the student id is been appeared, student name नहीं आ रहा है. So उधर उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं. और यहाँ पे आपको देख सकते हो कि कोर्स कोड के साथ में कोर्स का नेम एसोसिएट हो गया, तो ये हमारे लिए सही चल रहा है. सो स्टूडेंट का सर्च लेआउट चेंज करेंगे, इसका पेज लेआउट चेंज करेंगे परचेस का, और यहाँ पे रेटिंग नाम का जो भी हमारा फील्ड था वो ऐड नहीं हुआ है, उस फील्ड को ऐड करेंगे. देन डिस्काउंट है, ओरिजिनल प्राइस है, बट सेलिंग प्राइस यहाँ पे नहीं है, वो फील्ड हमने नहीं बनाया था, वो फील्ड भी अभी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं. ओके, एंड टू डू दैट जस्ट गो टू योर डेवलपर और गो टू योर पास साइड बाय क्लिकिंग ऑन दिस गियर आइकॉन. सेटअप पे क्लिक करके फिर ये पास में ऑलरेडी हम लोग हैं, एंड देन क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट मैनेजर. ओके, अब कौन से ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं हम लोग? तो पहले हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे सर्च लेआउट चेंज कर लेते हैं. सो सर्च फॉर द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, गो टू योर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, देन चेक फॉर द सर्च लेआउट. ओके, नाउ search for your profile is system administrator. I am going to click on system administrator. then student id के साथ साथ हम student name ऐड कर लेंगे इसके अंदर. now let's quickly save this. Now you can go to your SaaS side, go to your student object, and you can see student ID is now associated with the student's name. Okay, now अब नेक्स्ट क्या करना है? अभी जाना है परचेस ऑब्जेक्ट में. टू डू दैट गो टू योर ऑब्जेक्ट मैनेजर, सर्च फॉर द परचेस ऑब्जेक्ट. ओके, click on purchase object. Now we need to organize first of all the data, and to organize we go to the page layouts. ओके, पेज लेआउट्स पे जाने के बाद में इस पर्टिकुलर लेआउट को ओपन करो. ओपन करने के बाद में एक पैलेट आएगा और नीचे आपका सेक्शन आएगा. नाउ दिस इज द पैलेट. नाउ यू कैन सी रेटिंग नाम का फील्ड हमने ऐड नहीं किया था. सो यू कैन सी रेटिंग फील्ड ओवर हियर. ओके, अब ये रेटिंग फील्ड हम इधर पहले ऐड करेंगे. तो रेटिंग ऐड करने के लिए इसको ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है. यू कैन सी the rating field is now available over here. अब क्या करेंगे? इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे. सो लेट्स क्विकली डिवाइड. सो जस्ट ड्रॉप दिस मास्टर इन्फो. मास्टर इन्फो के अंदर हम लोग लेंगे मास्टर इन्फो के अंदर हम लोग लेंगे कोर्स. कौन सा कोर्स है, कौन सा स्टूडेंट इस कोर्स को ऑप्ट कर रहा है. ओके, then we have a payment, original price, selling price, rating, and discount. So I'm going to bifurcate all those data. So let's have our pricing or a price section. Let's click on price, add a price called original price. Okay, and then add a mode of payment. नहीं, ये नहीं लगेगा. हम लोग एक काम करते हैं, हमने एक फील्ड बनाया ही नहीं. इसमें कौन सा फील्ड ऐड करना था हम लोगों को? बेसिकली सेलिंग प्राइस वाला फील्ड ऐड करना था, वो हमने बनाया ही नहीं है. सो
ये प्राइस मास्टर इन्फो के नीचे ऐड करना है, तो इसको ड्रैग करके ड्रॉप किया मास्टर इन्फो ऊपर, प्राइस नीचे। इसके साथ साथ डिस्काउंट वाला फील्ड भी इसमें अंदर ऐड कर लेते हैं हम लोग। सो आई एम गोइंग टू ऐड डिस्काउंट ओवर हियर। So basically I'm going to add discount over here, and then mode of payment and rating. So drag this, और ये सबसे आखिरी में डालते हैं, इसको नाम देते हैं अदर। And let's quickly save this by adding the mode of payment, oh shit, mode of payment and then rating into this, right? And that's all। ये हो गया हमारा, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर ली। Let me check if it is all correct or not. Fine. Let's quickly save this and go to your SaaS site. Let's refresh it. Go to your purchase object or purchase tab. Okay. And then quickly click on new and see whether the data is organized properly or not. Yes, it is organized properly. Now, one field is missing over here, and that field is selling price. Okay. एंड यहाँ पे आप एक और चीज नोट कर सकते हो, यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। सो बेसिकली ओरिजिनल प्राइस इंसर्ट नहीं करना चाहिए, ओरिजिनल प्राइस कोर्स के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, अपीयर होनी चाहिए, है ना। लेट्स से कि हम लोग कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं एपेक्स प्रोग्रामिंग, तो एपेक्स प्रोग्रामिंग के लिए हमने कुछ ना कुछ प्राइसिंग ऑलरेडी असाइन कर रखी है, एंड दैट प्राइसिंग इज कोर्स फी, दैट इज 8,000 रुपीज। वो 8,000 कोर्स से किधर आना चाहिए, परचेस में आना चाहिए। सो पहले क्या करेंगे, ये परचेस में जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसमें रिलेशन लगाएंगे, ये डेटा किधर से लाने का है, हम लोगों को कोर्स ऑब्जेक्ट से लाने का है, तो वो ऑपरेशन पहले परफॉर्म करते हैं। एंड टू डू दैट गो टू योर ऑब्जेक्ट मैनेजर, ओके, एंड सर्च फॉर द परचेस ऑब्जेक्ट। परचेस ऑब्जेक्ट में जाने के बाद में फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाएंगे। फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाने के बाद में कौन सा फील्ड था, ओरिजिनल प्राइस फील्ड था, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमको क्या चाहिए, नाउ वी वांट डेटा फ्रॉम कोर्स ऑब्जेक्ट। ओके, अब कोर्स ऑब्जेक्ट से अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू चेंज। अब इधर इसका डेटा टाइप क्या, बेसिकली इट इज, इसका डेटा टाइप है करेंसी, ये हमको चेंज करना पड़ेगा टू द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमको अलाउड करेगा टू फेच द डेटा फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, एंड टू डू दैट let's check whether we are able to change the data type of this particular field or not. Now we have the option called change field type, you just click on it to change the, now you can see we don't have an option for a formula field। okay, तो इसका मतलब क्या है, once you set, you are not supposed to change the data type to a formula। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमने क्रिएट किया था ये हमारे कुछ काम का नहीं है। ओके, एंड अब क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस पर्टिकुलर फील्ड, क्योंकि वो करेंसी नाम से मेरे कोई काम का नहीं है। सो गो टू फील्ड्स एंड रिलेशनशिप and check for the original price। okay, let's click in front of that, click on delete, and you can see that particular field is been deleted। okay, now I'm going to create a new field with the help of new, then I'm going to select a data type as a formula data type, then click on next, then add a field label as a original price, field name is original price, that is going to automatically selected। now अब ये फॉर्मूला से जो भी वैल्यू आएगी उसका डेटा टाइप क्या होगा, तो उसका डेटा टाइप करेंसी होगा, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ द फॉर्मूला फील्ड इज ओपन ओवर हियर, ये बोलेगा ओरिजिनल प्राइस इक्वल्स टू, किससे रिलेवेंट है, तो अभी वो सर्च करने के लिए इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करने के बाद में
ये परचेस ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद द कोर्स, तो कोर्स पे क्लिक करने के बाद में आपको मिलेगा कोर्स से रिलेवेंट जितने भी फील्ड्स होगी वो, तो उसमें हमको चाहिए कोर्स फी। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू ऐड दिस कोर्स फी। तो इधर फॉर्मूला बनेगा ओरिजिनल प्राइस इक्वल्स टू कोर्स फी, राइट, एंड जस्ट नीड टू क्लिक ऑन चेक सिंटैक्स। तो हमने सिंपली इधर की वैल्यू इधर असाइन किया है एंड नो एरर इज देयर। नाउ यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, that our formula is set perfectly, and you need to show the visibility. Now I am going to assign the visibility only to the system administrator, so that's why I'm going to assign it is visible only to the system administrator. Then click on next. Once I click on next, it will say, देखो ये वाला बोल रहा था मैं, परचेस लेआउट, तो ये देखो ऑटोमेटिकली परचेस लेआउट पे क्या हो गया, ये ऐड हो गया है। नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन सेव। दैट्स फाइन, ये सेव हो चुका है। नाउ लेट्स क्विकली गो टू योर साथ साइड, जस्ट रिफ्रेश दिस पेज and then click on new. You can see now your original price is now no longer appear over here. क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, तो आप इंसर्ट ही नहीं करने वाले हो, तो इधर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी एक फील्ड हमारा बाकी है, वो बनाने के बाद में मैं आपको दिखा दूंगा कि वो ओरिजिनल प्राइस अकॉर्डिंग टू द कोर्स आता है कि नहीं आता है, वो कैसे देखना है हम लोगों ने। ठीक है, सो लेट्स क्लोज दिस, गो टू योर pass side, open an object manager. Let's search for the purchase object. Sorry, purchase object. So first of all, I need to go to the page layout. Okay, और थोड़ा सा इसको मैं properly organize कर लेता हूँ। So if you see discount is there, you can put this discount over here. Okay, you have your original price over here. You can put this original price over here, जो visible नहीं है वो, right? And next, let's quickly save this. Go to your object manager. Once again, go to your purchase. Then click on fields and relationship. Now I am going to create a field. कौन सा फील्ड क्रिएट करेंगे, तो ये फील्ड हमारा बाकी था, कौन सा, सेलिंग प्राइस। ओके, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर फील्ड कॉल्ड सेलिंग प्राइस। इसका डेटा टाइप क्या है, फॉर्मूला, हम लोग सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने वाले हैं। सो टू डू दैट वी चूज अ फॉर्मूला, then click on next. Okay, let's add a label, that is selling price. Okay, selling price, field name automatically get populated. अब जो भी कैलकुलेट आएगा, कैलकुलेशंस आएगा, that cut to the currency, that's why we choose currency as a return data type, and then click on next. Now you need to calculate, है ना, कि सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस पे डिस्काउंट लगाते हैं, और जो फिर कैलकुलेशन होता है दैट इज सेलिंग प्राइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चूज द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस विल बी गेटिंग फ्रॉम द सेम ऑब्जेक्ट, बेसिकली द सेम ऑब्जेक्ट है ओरिजिनल प्राइस। वी आर गोइंग टू इंसर्ट दिस ओरिजिनल प्राइस, राइट, मल्टीप्लाइड बाय, if your discount is basically 60%, राइट। अब ये समझ लो, अगर आपका डिस्काउंट है 60% का, ये मैं इधर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझ लो इस चीज को। अब एक चीज है 100 रुपीज की, ओके, इट इज अ प्राइस 100 रुपीज एंड डिस्काउंट इज 60%, ओके, डिस्काउंट इज 60%, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। सो 100 रुपीज के ऊपर 60% का अगर हम लोग डिस्काउंट लगाएंगे, तो 40% इज एक्चुअल प्राइस दैट वी नीड टू पे। तो 100 का 60% होता है 60। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 100 माइनस 60, दैट इज इक्वल्स टू 40। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस। ओके, एक ये वे है, या फिर आप क्या कर सकते हो, डिस्काउंट कितना है 60%, सो एक्चुअल प्राइस कितनी लगने वाली 40%। सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू कैलकुलेट डिस्काउंट
और 100 माइनस डिस्काउंट, ऐसे भी कर सकते हैं। लेट्स से 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हो गया हमारा, लेट्स से 60%। ओके, तो हमको मिलेगा 40% जो हमको एक्चुअल प्राइस पे लगाने का है। सो वी डायरेक्टली अप्लाई एक्चुअल प्राइस पे 40%। तो कैसे होगा, एक्चुअल प्राइस इनटू 40%। 40% इज ऑलवेज नथिंग बट 40 डिवाइड बाय 100 एंड विच इज गोइंग टू बी डिनोटेड एज 0.4, राइट, एंड 60% इज ऑलवेज डिनोटेड बाय 0.6। सो हमको क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस इनटू रिमेनिंग प्राइस, डिस्काउंट माइनस 100 माइनस डिस्काउंट और 1 माइनस डिस्काउंट। सो सिंपली, सो अभी मैंने बताया 60% मतलब 60 डिवाइड बाय 100। ओके, एंड इसका मीनिंग होता है इट इज 0.6। ओके, तो ये हमको 100 में से माइनस नहीं करना है, ये हमको 1 में से माइनस करना पड़ेगा। नाउ 1 माइनस discount. What is the discount? So we need to select the discount. So here we have a discount field, insert this. Now अब क्या हो गया, जो भी डिस्काउंट होगा वो 1 में से माइनस होगा, जो रिमेनिंग होगा वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑन ओरिजिनल प्राइस। दैट्स व्हाई दैट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद द ओरिजिनल प्राइस। तो ये सिंपल फॉर्मूला है ना, टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। ये हम लोगों ने फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड तक यही चीज किया हुआ है। just click on the check syntax. Now you can see, is there any error? No, there is no error. Now just click on next. Check the visibility. I am going to show this particular field only to the system administrator, then click on next and simply save. Now you can see this particular field is added into your object. Now once again I am going to the page layout basically. अब मेरे को थोड़ा सा इसको अच्छे से अरेंज करने का है, that's why I am going to enter into the page layout. Now you can see there is a field called a selling price is now appeared over here. So अब मैं क्या करूँगा, ये प्राइस वाला सेक्शन उठाऊंगा, इसको सबसे लास्ट वाले सेक्शन पे लेके जाऊंगा। नाउ हियर यू कैन सी फर्स्ट आता है मास्टर इन्फो, फिर आता है अदर, और फिर आता है प्राइस। और इधर क्या करते हैं, ये सेलिंग प्राइस को भी इसके साथ में एसोसिएट कर देते हैं इसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। लेट्स क्विकली सेव दिस। अब इसका आउटपुट कैसे आता है वो आपको पता चलेगा। लेट्स क्विकली सेव दिस एंड गो टू योर सास साइड, गो टू योर परचेज, click on new. Now let's refresh. Let's refresh first. वापस मेरे को प्रॉब्लम देना शुरू कर। Let's refresh 4-5 times. तो हम लोगों के साथ में गया था, सो इसका टेंशन नहीं लेने का, इसको रिफ्रेश कर लेने का 4-5 बार। कुकीज का प्रॉब्लम है बिकॉज इट इज एन वेब एप्लीकेशन वर्क्स ऑन अ क्लाउड। ओके, इसलिए ये प्रॉब्लम देगा ही थोड़ा, इससे रिलेवेंट। ओके, लेट्स क्विकली, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, बाकी फील्ड्स हमारी अपीयर हो चुकी है। लेट्स ट्राई टू ऐड दोस डेटा। लेट्स सिलेक्ट द कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सिलेक्ट एपिक्स प्रोग्रामिंग। इसका टोटल प्राइस है 8000, वो आना चाहिए। कौन सा स्टूडेंट परचेज कर रहा है, लेट्स से हितेश इज गोइंग टू परचेज दिस कोर्स। आई एम गोइंग टू ऐड अ डिस्काउंट इज ऑफ 40%। 40% डिस्काउंट देंगे हम उसके ऊपर। लेट्स सिलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट। लेट्स से फोन पे इज द मोड ऑफ पेमेंट। एंड रेटिंग देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 आया था, है ना, मैंने वो सेकंड ऑप्शन चूज किया था कल। सो ये देखो ये 5 ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आया। सो वी keep this rating as it is and just click on save and new to create a new course. Now create a new course, select the course. Let's have Salesforce Admin. This course is purchased by the Dinesh and the discount is given
20%, and then mode of payment is GPay, rating is 5. Let's quickly save and new. एक और कोर्स इसके अंदर ऐड कर देते हैं. Let's say Salesforce Admin, purchased by the Mahesh. Discount is once again a 20%, and mode of payment is credit card, rating is 5. Save and new. Let's create one more purchase for the ML. Now this time Kamlesh is now going to purchase this particular thing. The discount is 30%, and mode of payment is MasterCard. And let's quickly save this. So we have 4 purchases. Okay. Now you can see there are 4 purchases purchased by the different people. Now you can see जैसे ही मैं परचेस में जाता हूँ, यू कैन सी द परचेस आईडी प्रेजेंट ओवर हियर एज अ लिस्ट. ओके, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन इट, तो आप देख सकते हो कि वी हैव अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप विद अ कोर्स एंड अ स्टूडेंट. दैट्स व्हाई वी हैव अ लिंक प्रेजेंट ओवर हियर. सो इफ आई वांट टू नो विच कोर्स आई हैव परचेस, तो इधर आप क्लिक करो तो आपको कोर्स के डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे. राइट नाउ अभी हमको देखने का है कि ओरिजिनल प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर कैलकुलेट हुआ है कि नहीं. सो व्हेन एवर वी स्क्रॉल डाउन, यू कैन सी डिस्काउंट के साथ में ओरिजिनल प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख के आया. सो टोटल डिस्काउंट इज 30% एंड ओरिजिनल प्राइस इज 3,000 रुपीज. देखो अब ये एडिटेबल नहीं है क्योंकि ये पॉपअप हो रही है फ्रॉम द कोर्सेस. ओके, और उसका सेलिंग प्राइस भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए ये भी आपको एडिटेबल नहीं है. ओके, सो 3,000 का 30%, 10% होता है 3,000 का 300 रुपीज. तो 30% हो गया 900 रुपीज. सो 3,000 माइनस 900 इज 2,100. Okay, so this is the selling price which is actually going to calculate correctly over here. Let's quickly go to other purchase order. Let's say P003. Let's go to this. Now you can see the selling price is 5,000 rupees. The total discount is 20%. So 10% is 500, 20% is 1,000. Now the selling price is 4,000 rupees. This is automatically going to be calculated by the formula field जो हमने उधर set किया था. So you can see your data is now going to saved correctly, and you are able to organize your search layout as well as page layout by using a page layout and search layout in object manager. So that's all from my side. आज यहीं पे हम लोग रुकने वाले हैं. ओके, सो आज हम लोगों ने